Hello. Hello. Good evening. Can you all hear? Hello. Yes, sir. Can you all see me? Yeah. Good. Good evening. Yes, sir. So, aji ame what I will do. तमर जो mock test 22 है So we'll go through the mock test 22. We will see a few questions out of them. ताकू किमते आंसर करिवा सेटा मु माने I'll give a few model answers to that. That tome you also give your suggestions as I go along. So let's make it interactive. तमे देइछो टेस्ट देइछो त ना के इतो के देइछो how many of you have given देइछो के अच्छा some of you have given आउ तुम देइछो के नहीं अच्छा no problem so okay. So before I go into the questions, so we will look at some very interesting issues which have recently come. Got a Ray Dalio, there's a guy called Ray Dalio. Ray Dalio, he has written a book on the world economy. So it is a very sensational book, and in this book he has tried to compare various countries in terms of various indicators. That includes India, USA, Germany, European Union. So basically in that particular book he is trying to demonstrate how do you measure a strength country. Generally we go by GDP, per capita income, all this we go through. But he has gone beyond that. He is a highly respected investment advisor, right, Delio? When the world is the biggest investment advisor say. So therefore, when he writes something, when he speaks, anybody YouTube Ray Dalio is absolutely a sensational guy. 21 ବର୍ଷ ବୟସରେ he started with a startup, and he's a billionaire, absolute billionaire, and he advises people. Se sabu bibhinno jagare se jaikiri korchu. So in one chapter, but it has relevance with polity. In one chapter, so he has said, world what is the experience of the world after Second World War? After the First World War, any government which works either to the extreme left or to the extreme right. There are three spectrums. Either you can be a communist, you can be an absolute leftist, or you can be a hardcore market fundamentalist. You to come right of center, or you can be just a liberal. So he says that if you go to the other extreme, and you try to be popular, please note down, this is very important. Whenever are you all understanding? You pass through a crisis, whenever you pass through a crisis, you look for a leader who you think will take your country out of an economic gloom. Are you all getting me? So that is how great leaders sometimes are populist leaders. There are two types of leaders. Who have contributed very significantly to the growth of a country. There are also some leaders who have been real demagogues, who speak a lot,
who try to change the entire discourse of a country. So he says, please note down, in 1917, we had the Russian Revolution. In 1917, we had the Russian Revolution. But subsequently, interesting. 1917, you had the Russian Revolution. The whole concept of communism came. It is a victory of the proletariat. The Tsar was exploiting the common people. In Russia, what was happening? The factory workers were getting exploited by the factory owners, and the Tsar who was in power was also exploiting the people. So it was a movement against what? Exploitation. Are you all getting me? It was a movement. What was the movement? The movement was against exploitation. So when Lenin took over and he became the head of the political system, so there was a lot of expectation out of him. Okay. So socialism as a concept, communism as a concept, struck a very, very deep chord in people's mind. Here is an ideology which is for the poor. Ideology which is standing for socio-economic justice, which is looking for equity. Please note down, apart from socio-economic justice is what? तमें कहा कहो चाउल टिके कम दाम दे दबा कि कहा को गोटा फ्री मेडिकल दे दबा एटा हला सोशो इकोनॉमिक जस्टिस अरे फिर में पॉइंट फ्री एजुकेशन दे दबा कि गोटा मेडिकल केयर कर दिस इज सोशो इकोनॉमिक जस्टिस द अदर इज गोइंग बियॉन्ड दैट एंड लुकिंग फॉर अ सोसाइटी which is based on equity. Please note down, and there is no difference between a rich man and a poor man. Please note down, in access to opportunity. Please note down. Equity it can never be the case that everybody would be earning the same amount of money. Equity doesn't mean that everybody has the same amount of money or earning the same amount of money. Equity means equality of opportunity for good education. Are you getting my point? Equal opportunity for quality education, healthcare, sanitation, access to technology, access to nutrition. It's equity. So many times people think, socialism is baje because it is considered that. No, you have to consider everybody as equal. Are you getting my point? Just because there have been differences in your birth. By birth, supposing I was born to a teacher, somebody can be born to a slum dweller. So how do we ensure equal opportunity? Are you getting my point? So it was Russia who showed the way. तामने समस्त को ब्रेड मिलिबो लंबा माने मोर मने अछि आबे थरे मस्को रे मु आ डॉक्टर कलाम आ आमे तीन चार बुलुचु सेतला आमे देखलु जे बहुत उडा लोक माने गरीब लोक लागुथला जे दे वर वेरी अनवेल दे आर नॉट कीपिंग गुड हेल्थ सो आई स्टिल रिमेंबर डॉक्टर कलाम आस्क्ड द एम्बेसडर ये is it true that many Russians are having poor health and all? Is it true? Specifically, yes, sir. He said when communism was there, healthcare was a right of every Russian. You don't find any Russian who is moving around the street with ill health. Food is available. Good food is available to everybody. Good healthcare is available to everybody. Everybody was going to a good school. All these equal opportunities were completely lost sight of when Russia disintegrated. You must understand. So therefore, as a concept, so they were in the power. But by 1991, why did it crash down? Somebody would ask, "Sir, jodi ete bhalo katha thila,
Why did it fall down? For 3 reasons. Note kar. Eguda sabu, these are all things that interview teme jibo ki IAS parikha mein jibo. Eguda sabu re tome kahinki, why? What is the main reason? The first reason was that the party in power had no opposition. Got a democracy live breath hela opposition. Liberal democracy live breath hela that there is an opposition party. So if you have one party, then there is no dissenting voice. So supposing Communist Party is not doing something right, now what was happening that if somebody was protesting against that, they were being ruthlessly. So if somebody is protesting, Taku state was repressive. So first is absence of dissent, and second is suppression of depression of dissent. Ruthless suppression of what? Dissent. And third lack of incentive. Lack of incentive. Lack of incentive mane jodi tame samastoku saman boli bhabilo, samastoku saman paisa delo, then why should somebody try to excel? So communism doesn't have a concept of incentive. Buji pocho kathata? So 3 things. One is lack of opposition, second ruthless suppression of dissent, and third hochi lack of incentive. So ei tinita pai semane kahale je nai American democracy is better. So liberal democracy setebale Francis Fukuyama wrote a book, End of History, called End of History, 1991. Please write down End of History. End of History Fukuyama kahila je liberal democracy, please note, liberal democracy and free market is the right cocktail for a good country. Kaun kahili? Liberal democracy au. But the lesson we learned from history, what is the lesson that we learned? Anything extreme left is to be avoided. Are you all getting me? So that doesn't, okay. Now we come to, please note down, Germany. Now, opposition hochi, come hochi, democracy is not, it's a good question you have asked, but they still do not have, even in China, they don't have really proper democracy, but they have a free press, private property. There's no concept of private property. It's a very good question you have asked. But there are still dissenters. You have newspapers which write against the government, but it is another matter that the government sometimes put them behind the bar. Same problem is there with China also. But the main change that has taken place is in the economic dimension. Are you all getting me? So it's a very, very good question. The economic dimension, the free market concept, private property concept, incentive concept is there. Are you getting me? So, but it is still not democratic enough. You can say that. They are not, even China, in terms of the index of democracy is very poor. You can say that. Agro 0 thila, ebe 5 mark 10 mark pailo. Kintu market economics se na pura 100 mark pahunchadi. Paisa banebare ekdam pura badhiya mark pahunchadi. Anyway. How do you differentiate between communism and state? China, what is doing? It is allowing private business to flourish, but it is also dictating in which direction it should go. Got a pure capitalism, right? 1 minute. Got a pure capitalism, state capitalism. Pure capitalism, right?
what business you have to adopt is completely your choice. It is by virtue of the kind of profit that you are making. But supposing China abe कहबो जे नाही हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रे हमें इन्वेस्ट करबा, सेमीकंडक्टर जदि इन्वेस्ट करबा ताहाले हमें स्टेट तुमको सब्सिडी दो. So it is clearly directing. माने there is a MyBap on top which is allowing free trade, free market economy, but at the same time जोटा तुम कहला state capitalism. State capitalism कौन ना धर तमे धर जो इंडस्ट्री तमे गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहूची सिटी बैंक उसमें कहबे you give them at lower interest rate or will waive that, so the state will be supporting. So say गुडा का सब chronic capitalism भी आछी, chronic capitalism भी सित्रा आछी. But more importantly, the choice of investment is not left to the private parties but to the state. There are aji जो major तुम्हारा tech companies अमेरिका रा अछंती जोटा कमे Facebook हेले कि Amazon हेले एवडा हेले, so they are completely free except that the state regulates them. ताले monopoly होबो कि नहीं भी, but otherwise have you understood? So therefore extreme left. Now we come to Hitler. Now Hitler came to power in 1933 because he was able to convince the Germans. He was able to convince the Germans that the Allies have heaped humiliation on Germany. In First World War pare हमको इतने समय loan हमको नौचंदी पैसा नौचंदी war reparation नौचंदी, it has been very humiliating. So the first thing that he did when he became the chancellor was to refuse paying all those loans. Please note down. So he refused. So the Germans really loved it. That here is someone, okay, who has come in a crisis. Germany had just come out of hyperinflation. German hyperinflation la 1927 ରୁ 1929 पर्यंत there was hyperinflation, very very high levels of inflation. So एके तो higher inflation, hyperinflation, बहुत hyperinflation. Second है the mounting debt which the Germans were subjected to after their humiliating defeat in the First World War, which was so Hitler came in 1933. So Dalio, then please note down, in 1933 another person who came to power was Franklin D. Roosevelt. Dekho, 1933 re jetebale Germany was down in the dumps, setebale Hitler asla by promising a bright future for the Germans. Se kala theek ache mu dekhebi tumku Germany ta kon tumku dekhebi, mane I will avenge for the humiliation that was heaped on Germany. 1933 re jetebale Franklin D. Roosevelt asla, his promise was that I will take you out of depression. Now, very interestingly, Dalio writes, please note down, unemployment in Germany in 1933 was 25%. And in US, it was 33%. So Hitler represented extreme right. Extreme right ro kon manifestation hala? Now let us try to understand extreme left or extreme right. Extreme right of first hala nationalism. I mean Germans, and cultural superiority. Please note down. This is very important. Go to extreme right of manifestation. I am Hindu. I am Muslim. I am German. Are you getting me? So same manifestation, same got extreme right. Our second hala decimation of opposition. Kiye di party tundo kola, ago pitikiri bahar kar. Bujhata. So that is common for both communists and fascists. Jaha Lenin korthala, jaha Stalin korthala, se saman kotha Hitler korthala. Kichi dijonankar mukhar kichi नहीं. So
So this was but very interestingly, please note down, very interestingly, Dalio writes that by 1938, both Germany and USA had almost zero unemployment. Please note down it. So in 5 years' time, are you all getting me? से गोटे एक्सट्रीम राइट लीडर आ गोटे एकदम लिबरल डेमोक्रेट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट achieved the same result. Are you all getting me? So many times when we try to assess Hitler, we are completely oblivious to these great, turnaround that he ensured in Germany. Are you all getting me? So he ensured that everybody was employed, properly employed, educated, all these things. Industry was booming. So he set up this whole thing called Volkswagen car tankara. So he but he prioritized production. Again, prioritized production. जोटा तुम कहूँ बर्तन कहली जे कम्युनिज्म जो कथा अछि, he also prioritized production. Secular नाई, आमे बनेमा submarine बनेमा, aircraft बनेमा. So the whole production mechanism was geared to defense. Please note that military industry complex. Now, why am I talking about all this? He was a popularly elected leader, like Franklin Roosevelt. He came through a popularly elected leader, but he completely destroyed the constitution. And ସେଇଥିପାଇଁ basic structure doctrine was brought in Germany. Please note down. The basic structure doctrine was brought in Germany because a Democrat destroyed all the democratic norms. So therefore, in their constitution, they ensured that there were a few things you can never, even if you have 100% majority, you cannot destroy. Karo? No, it is Germany only. USA doesn't have a basic structure doctrine. USA doesn't have basic structure doctrine. No. Same Nanipal German law jurist Karnat. Please note down. His name was Karnat. K-R-N-A-D. So many times people confuse and say US. No, he was from Germany. So he was a jurist. He was the person who coined the whole concept of basic structure. This is the basic structure. But again, if you have an extreme right government, how do you save your nation or a constitution? Only through the basic structure doctrine. Are you all getting me? So, whether when you go to extreme left or to extreme right, so what did Hitler do? Unemployment से कहला मु पूरा देशटा को पृथ्वीटा को जय करिवि, पोलैंड को जय करिवि, रशिया को ध्वस्त करिवि, समस्त को ऑस्ट्रिया को अटैक करिकरी, I will gulp everything. So he became an adventurous. So he wanted to, so military conquest became his predominant focus. On the other hand, America, just see here, please note down that in Germany, the growth rate when Hitler was there was 8%. And per capita income increased by 22%. Everyone, not just the rich. Please note down, this is very important. But the benefit of productivity, income was shared by everybody. Please note down, this is very important. Whether your prosperity is being shared by a few money or it is distributed properly is again a challenge. And Hitler ensured that. So, but our major difficulty nationalism.
hyper-nationalism, anti-Semitism, decimation of opposition, and military misadventure. Are you all getting me? तार कौन असुविधा हला एक्सट्रीम लेफ्ट रो कौन असुविधा हला जे द डोमिनेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो इंसेंटिव फॉर एक्सीलेंस बुझी पड़छ तो ज्यूज मार्क अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूज माने सेइथ में जो वर्तमान हम कहउचंती इंडिया इज इंडिया बिकमिंग अ फैसिस्ट स्टेट इट इज शोइंग ऑल द साइंस ऑफ fascism. Are you all getting me? मु एते तुम कहयार कथा के कहउची जे तुम माने सिविल सर्वेंट हबो तुम माने चाकरी करिवो तेनो तुम हाथ रे बहुत रिस्पांसिबिलिटी अछि. Are you getting my point? माने how you become non communal माने what come whatever may बुझ पछो तो how you become non communal. That is why I kept this particular thing. So how was Franklin D. Roosevelt different? Please note down. What did he do? He had a New Deal program. Those massive government spending, say massive government spending by a tax increase on the top income bracket. Please note down from 22% to 75%. जो सब बहुत अदानी अंबानी सब थिले तांको सब 75% चार्ज कर. So basically what happened? He did three things. Please note down. गोटा हला ग्रोथ बढ़ला बट ग्रोथ संगे संगे कौन कला ही एन्श्योर्ड सोशल सिक्योरिटी. सोशल सिक्योरिटी हाउ सोशल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ फूड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इन टर्म्स ऑफ accommodation in shelter also housing. Please note down health and housing. बुझी पड़तो तो कथा उड़ा को for the first time a capitalist country, please note down, spent 15% of its budget on social security. Please note down, 15%. Ebe it is as high as 22%. America ebe they spend close to 22% on social security. Whether it is Democrat or jette bale ye Trump कहउची जे नाइ ने ओबामा क्या को बंद कर देबी जो the ओबामा क्या जो ओबामा कर हाँ जो ओबामा तार हेल्थ ओबामा लिख दे ओबामा हेल्थ केयर he wanted to stop it in 2017 करीब लोगों में थिला about 78 poor Americans get benefited through health care through the Obama care. He said no, I'll stop it. So he did not find any favor. Even in the second term, he doesn't talk about it. He doesn't talk about it. Because देखुची जे इतरे poor people, elderly people, people who are handicapped, you know, so they will be affected. So growth, social security, and distributive justice. So the point from where I want to end on this whole thing, neither extreme left nor extreme right is the way forward. The way forward is having democracy, please note down, democracy, dissent, incentive, free market, and welfare state. Please note down. कौन components कौन है ना? Democracy, dissent, incentive, तापरे free market, and a welfare state. तो मतलब आंसर तो करूँ if you are able to capture these points, ताले तो examiner will know that you have a good understanding. माने जो उठी देखियो तमे जो गवर्नमेंट सिस्टम टा जो कनाडा रे जे नुआ प्राइम मिनिस्टर तापर मु लिखिची से लिखिची जे जेताबेले ताको इज गोइंग टू टेक ओवर ताको तरे पचारले जे व्हाट इज योर रिस्पांस टू ट्रम्प से कहला ही इज अ मैड कैप से कहला इन यूएस health is business, in Canada health is a right. Please note down, health is a right in Canada. It's a universal health scheme jota kohutla se. It's a right, it's a fundamental right. The education amara fundamental right, health is a fundamental right. So it is big business in insurance is a big business. आज गोटे बहुत भल आर्टिकल अच्छी हिंदू रे पढ़िबो
आज बहुत सुंदर आर्टिकल देछि जे हमर जो प्रेजेंट हमर जो हेल्थ केयर स्कीम अछि how it is insurance based and how it is not taking care of primary health care आज पढियो आज इंद्र बाहाची ब्यूटीफुल आर्टिकल ब्यूटीफुल एडिटोरियल लिखो माने मेन एडिटोरियल तळे गोटे अछि से दिरा स्त्री लोक लिखिचंती so there they have said how in India though we have this Ayushman Bharat all these schemes are there how they are not helping primary health care माने तमे एडमिशन होची हमको होची रेफरल होची सेते तुमको होची किंतु जो बेसिक हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट जोटा कि तमे यूनिवर्सल हेल्थ केयर रे पाउचो इन जर्मनी इन कनाडा सेटा नाही बुझी पड़छो तो कनाडा रे यूके रे माने तुम बुझी पड़छो तो प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट इंडोर एंड आउटडोर बर्तन कोन छै ना इंडोर केयर पे इंश्योरेंस मेकानिज्म टा अछि किंतु आउटडोर केयर पे इट्स स्टिल नॉट it's free but the quality of your hospitals are very very poor extremely poor बुझो तो हाँ इंसेंटिव हला जे गोटे गोटे फ्री मार्केट सिस्टम रे तमरो जो अर्निंग टा is contingent on your merit and your effort तुम सेटा इंसेंटिवाइज्ड हो तुम भलो आंसर टे कले तुमको 9 मार्क मिलिबो बाजे आंसर टे कले 5 मार्क मिलिबो हैला इंसेंटिव कोई बोल जे सर काई मते 5 मार्क मिलला सर मु तो भलो थिले आपको बहुत प्रशंसा करथि नाही नाही हैला नहीं भलो आंसर टा को हां इट नॉट फॉर्मड इट इज सोशलिस्टिक सेटा होछि सुना सेट न सुना इट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन पे लिखो से कोच गोटे ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट जोटा तुमको मदर कहली एक्सेस टू इक्वल अपॉर्चुनिटी ह्यूमन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट तंकर मेन थ्रस्ट होछि बट से माने फ्री मार्केट ऊपर विश्वास करना सेन कहउचंती द मेन प्लीज नोट डाउन द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोशल सेक्टर शुड बी विद द गवर्नमेंट प्लीज नोट डाउन आजा So essentially, बुझी पड़छ तो कथा को are you all getting me? Are you all getting me or not? Amartya Sen is not extreme left. Please note down. Amartya Sen is communism minus single party. Communism, socialism with democracy. माने आजी माने देखो बर्तमान गोटे हला गोटे हला सेंट्रिस्ट गोटे हला लेफ्ट ऑफ सेंटर एंड राइट ऑफ सेंटर ए माने हटे लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट सो सितरे हला ने दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तो एटा हॉस्टस ना किंतु कथा होची कोन बट इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट को भले गवर्नमेंट आसीबो ता ऊपर डिपेंड करिवो लोककर वेलफेयर धर फॉर इंस्टेंस a small thing suppose the government decides that I will improve primary healthcare centers and government schools by putting some 4 to 5% more of the GDP बर्तन आमे only 5% of the GDP आमे education health रे करते Kali Mr. Modi decides that I will spend 10% of my budget on education and health and I will improve khali kharcha karibeni I will really improve the infrastructure the quality of teaching all this is what Amartya Sen is asking now please remember they are making a distinction please remember between the social sector and the economic sector please note down in the economic sector they are looking at a mixed economy in the economic sector, they are not looking at only public sector. Please note that in the economic sector, public-private partnership, it can be also private, it can be also three. All the three modules hoji. The bhalo kathare kahila, Amartya Sen has never spoken about public-private partnership. But that's a facet of
माने कथा होची कोन एगुडा को सब होची लिबरल थिंकिंग जे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवा गोटेला नाई आमे खाली पब्लिक सेक्टर रखियो गोटेला नाई आमे सला माने जमा पब्लिक सेक्टर को धारा छ दबारे लाइक फॉर इंस्टेंस यू हैव मिस्टर अरविंद पानागरिया जे हमरो अछंती फाइनेंस कमिशन रे चेयरमैन अछि आगुरु थिले प्लानिंग नीति आयोग रो चेयरमैन थिले वाइस चेयरमैन थिले से कहले जे तमे दे दियो एजुकेशन भाउचर दे दिए गरीब पिला को 200 खंडे भाउचर दे दियो सेटा सब पढी के ऑक्सफोर्ड रे पढियो सब बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढियो भाउचर दे दियो जेमति गरीब लोक को दे दियो ओडे ब्रेड दे दियो माने सो दैट्स अनदर अप्रोच मेनी ऑफ द पीपल रिच पीपल थिंक अरे किछि दे दे तको रोटी खंड दे दे ठीक है किरटी तो दे दे चॉकलेट दे दे से चुसियो चॉकलेट टी चुसियो सो दैट्स अनदर वन अप्रोच so anyway jokes apart the way forward why I am saying this what Ray Dalio is saying the way forward for a good government for a robust government is a combination of liberal democracy healthy dissent please write down liberal democracy healthy dissent comma a market system based on incentive, a market system based on incentive and a social security mechanism, a social security mechanism that protects the old infirm, please write down, that protects the old, the infirm, and the unemployed. Old, infirm, and the social security is not टंके चालो दबाटा. Social security हला जो मने काम करी पार नाहती, मने they are disabled, provide them. So that is where the social security concept comes. Healthcare to all, good basic healthcare to all, basic good education to all. These are all social security. So जो government रे पैसा बनाओ ता संगे किछि पैसा एगुडा खर्च कर. Is that clear now? Clarity आसीगला? Okay. So let's go to the आमे प्रथमे दीटा क्वेश्चन करिया प्लीज नोट डाउन. फर्स्ट क्वेश्चन हला जी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इनहिबिटिंग एनैक्टमेंट ऑफ यूनिवर्सल सिविल कोड. एटा आमे प्रथमे करियो हला यूनिफॉर्म सिविल कोड. द क्वेश्चन ही हैड आस्क्ड वाज अच्छी तो कहाँ पर अच्छी अच्छी ऊपर के देखला तो ओपन करो तार क्वेश्चन टा को एटा बुझीगल तो जोटा कहल तुम बुझीगल तो क्लैरिटी आसीला तो परे. हेलो हेलो हाँ discuss the possible factors that inhibit India. 1 minute. Discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizens a uniform civil code as provided for in the directive principles of state policy. So before I come to the answer, how do you structure the answers? It's a question that you expect. Involve
बॉयफ्रेंड को परे कथा हवा बुझले कि सो आम कौन एथरे करिया प्रथम करिया फर्स्ट लेख फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन अच्छी देख तबे गोटे जिस मन रख दिस ए वेरी इजी क्वेश्चन माने ऑन द फेस ऑफ इट तो देख गोटे जिंस प्लीज रिमेंबर वन थिंग ऑन द फेस ऑफ इट लुक्स अ वेरी इजी क्वेश्चन कौन सर एटा गोटे कहउछन समस्त जानिछु हम कौन उत्तराखंड रे हिची एबे तेलंगाना रे हबो एडा सब काहेंगे त एडा एते बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन एथे तमे जो आंसर टा करिवो मैक्सिमम पिला 3 मार्क पाइबे 2 रु 3 मार्क पाइबे यू विल नॉट गेट मोर देन 3 मार्क्स हम डिस्कशन करिवा मतलब आंसर टा देखेबी तमे जानि मो जे तमे काहे कि 3 मार्क मतलब कुछ कम कम से प्रथम कोन कहला what did he say please note down he said that first I will bring out the constitutional provision now what is the मन रखियो जे तमे देखियो सब प्रथमे जे तमे जो कथा देखुच केते से कथा लिखुछ समस्त को आर्टिकल 44 ता जଣା अछि प्लीज नोट समस्त जानछन आर्टिकल 44 तमे एटा गोटे किछि बड़ कथा नै आर्टिकल 44 ता सर आर्टिकल 44 रे डेरिवेटिव अछि अबे एटा तो नुवा कथा नुवा what are the other provisions please note down let us now see what are the other provisions around UCC जी सबुडा कहि दबो माने ताको सपोर्ट कला भलिया ताको अपोज करिया भलिया कोन कोन प्रोविजन अछि let us see बुझी पड़छ मोर have you understood the question on the face of it somebody would say जे मु आर्टिकल 44 को जीबी आर्टिकल 444 रे कोन सो एनीवे फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर टा करिया फर्स्ट हला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तापर पे जीबा एटा काई काम करने रे जे पेन टा ओटा थिला इट न था पेन टा नथला रे पड़ गला से पेन टा हैं देखले ठीक है पेन अछि रे पेन टा हां एटा बदे ना मार्क टा बता बताऊ हाँ अच्छी ना पेंटा सो नाउ लेट अस देखिए तो सब ज्ञानी पिला सब केते कोन करूछ टे देखिबा हला फर्स्ट कोन कहला constitutional provision those who are online they also constitutional provisions so they should also try to answer this second कोन करबा no first आपने देखिए हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स स्ट्रक्चर पकड़ो या ऊपर कौन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दोज हु आर ऑनलाइन प्लीज कंसंट्रेट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स फॉर अगेंस्ट and conclusions. Can we break up this question into these 5 parts? Person note करो. Why I am saying this? तुम भावो तो सार कौन हमको इतने छुआ पिला वाले भाई चंदी की? वो कहीं क्यों ना करूँ जी कोड़ा structure तो हम ठीक ही गले. तापर आए ना depth आड़ेगा. Structure परे depth आड़ेगा. मुझे पढ़ सकता. अच्छा now तुम कौन कहला सब सुप्रीम कोर्ट प्रोविजन तुम सार कौन कहले 44 अरे कौन 44 गोटे 44 आउ कौन टा हला आउ नहीं तो गांधी मते आर्टिकल को होना तो ठीक है तार सपोर्ट रे कौन आसी ते भाबो ठीक है अरे जमा व्यस्त होनी धीरे धीरे को 1 minute give me a big hand 25 रु 28 प्लीज नोट डाउन और लिख ताहाले तुम आंसर टा बुझी पड़छ तो कथाटा 25 रु 28 कहूची religious freedom to all including minorities मान पाई specifically
25 ରୁ 28 रे प्रोविजन अछि बुझि पड़छो तो बुझले कि नहीं बढ़िया कथा कहला आ गोटे कोन की गोटे कहतला आ गोटे ना आ गोटे कोन कहतला हां कहतला बढ़िया कहतला हां इक्वालिटी कहतला ताको गिव हर अ बिग हैंड कौन आर्टिकल आनी में ताली इक्वालिटी रे हां 14 आओ वेरी गुड 14 टाला इक्वालिटी बिफोर लिखो 14 टाला इक्वालिटी बिफोर लॉ बुझी पड़छ के सर 29 टा करियो कोनटा कहलो आर्टिकल 29 21 29 कोटा कहले बाबा आर्टिकल 29 सर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज सुनो एगुड़ा सब आसीगला हमर एथरे ए ब्लॉक आसीगला हला गोटे हला ओवरआर्चिंग आर्टिकल 44 गोटे हला 25 रु 28 और 29 गोटे हला 14 टू 15 हला सो एटा को 44 टा को सपोर्ट करछि 14 एंड 15 प्लीज नोट डाउन 14 टा की सपोर्ट करछि अरे 44 टा की सपोर्ट करछि 14 एंड 15 अपोज करछि की 25 रु 28 ये थिंकिंग कैप्टन लगाओ टोपी लगा टिके नहीं टोपी लगे भी नहीं मुझे मां खाली बॉयफ्रेंड संगे कथा है हबो के परे हबो वो कथा बुझु के नहीं वी मस्ट एंजॉय माने ये जो जिनसा तो धर बुझी गले तमे ना ताहल तमरो थिंकिंग प्रोसेस ता एकदम पूरा एकदम क्लियर हबो सो 25 28 इज फॉर एंड अगेंस्ट असला फॉर रे को असला 44 14 एंड 15 कोथे असला फॉर रे असला अगेंस्ट से कोन असला 25 रु 28 आउ जदि की गोटे कहि दबो ताको 100% मु 100 टका एबे फोन पे पठे सर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी नाही ताको छाड़ ना मु संविधान रे अछि ना मु सारा काहे बाहर चंदी हमें करबा संविधान को माने सीआरपीसी को आसिया सीआरपीसी को प्रोविजन अछि मत कहला अरे बाटो नहीं मत कहो ना कोटा टिके साटी कहतु संविधान को क्षेत्र को बाहर चंदी कहतु ना टिके देखु तो तमे केते सिंपल क्वेश्चन ना भाबुछ माने इति सहज क्वेश्चन ना सर करचंदी ना से 17 टा को रख नै 17 टा रख राइट टू लाइफ ना अजुथरे बढ़ेबानी कामटा को सी तमे गोटे देखो प्लीज रिमेंबर वन थिंग दिस इज वेरी इंपोर्टेंट टू ऑल ऑफ यू if you are not giving an answer in 250 words am bale bada answer hotla tare uda sub ani you have to give a very in 200 250 words you have to pack your answer with good content ajikari kon ho choti content yaar bolo content achi bada content achi देखिए so content is very important 17 भद्र आसीबो नि आउ कहो के को तो गोटे हिंट दूची Sir, is it equal pay for equal work? इक्वालिटी बिफोर लॉ कर देली 14 कर देली तुम सामने रे से कोई छरानी से ऑलरेडी इक्वालिटी बिफोर लॉ कहलानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हबनी 15 कोई छरानी उसको कोई छरानी से कोई छरानी से ऑलरेडी मेंशन देबे को तुमको आईएएस रो चाबीटा तुमको दे देबी आईएएस रो गाड़ी रो चाबीटा तुमको दे देबी एटा ने चाहिए लेकिन आईएएस गाड़ी रे बचब चलिया हिंट देबी एटा डिफिकल्ट क्वेश्चन इट हिंट दे देयर आर सम स्टेट्स which are having special provision as far as religion is concerned na jimte 370 yes 1 minute 370 yes Article 21. That 21 the right to life move ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡେ 370 already ତ 21 ରେ ଅଛ ତ ବାହାର ସେଠୁ ବାହାରलो I am saying that there are a few states where listen to me very carefully I am now giving a very big hint there are some states where the religious beliefs and practices
cannot be changed by a central law. Tell me one such state. Maro what guess maro. Then schedule caste. Pura schedule caste what pare. Schedule caste. Na what the pura 370 pare asla 371. Maharashtra task. ठीक है. तो कुछ ताली मारना ठीक है. There are two northeastern states, but it is not Manipur. Ken Madakhaila? Asingla. 372. Nagaland. 371A. Please note down. 371A. So Nagaland वाला कहले जदि UCC थे आनिमु ताले भारतर सबु जागा में जळे दबु. नागा जो अच्छी नागा जो नाग नहीं तुमको आसिक पूरा जड़ेबे 371A. The other state is Mishra. Please note down. एबे बुझी परछ कथाटा तो केतिकी संविधान प्रोविजन जानछु तो आंसरटा रिच हला कि नहीं वर्तमान हला. सो एतिकी तुमको कहया पे मु एडा सब एतिकी सब करथि हला. So now let us go to my answers. गोटे पेज रे फर्स्ट रे आर्टिकल 44 तापरे exemption रहला नागालैंड. प्लीज नोट डाउन 371A. मिजोरम होची 371G not 391. प्लीज नोट डाउन. सो दीटा स्टेट रे तांकर रिलीजियस कस्टम्स cannot be changed by a central law. किंतु ता पूर्व आउट प्रोविजन लगे दीची तुमको जे all religious issues, please note down, are in the concurrent list. अरे तुम नाटक में भूल गए हाँ सगरा. All religious issue, criminal law ये जो कहूची, civil law कहूची, all of them are in the concurrent list. That means it can be promulgated both by the state and by the center. So entry 5 pro concurrent list achi. Please note down. Entry 5 pro concurrent list achi. Je marriage, divorce, adoption or inheritance. Please note down. Personal law re charita katha achi. Kon hochi marriage, divorce, inheritance and adoption. Please note down. 8 hochi entry 5. 8 thare both the state. Please note down. Now the provisions are complete. तबे the answer करिवो. The adoption. ADO होगा ना? O करनी की? O करची ना? Adopt होची adopt करिवा. ADAPT. I am adapting to the new circumstances. Adopt माने पिला कौन थोड़े इंग्रजी रे इतने भलो थे कि इनकी कौन हलानी बेंगा हलानी सब तो करम कौन हलानी. So are you all now getting? बुझी पड़चो तो कितने बड़े संविधान प्रोविजन आसले नहीं. तो मैं आरंभ करिवनी आर्टिकल 44 टू आरंभ करिवनी. तो मैं आरंभ करिवो जे as per the Indian Constitution, issues of issues involving, as per the Indian Constitution, issues involving personal law like marriage, divorce, adoption and inheritance are within the prerogative of both the states and the center. Within bracket entry 5 concurrent list. Aim to the open Rosalind. Aim to the entry hela
entry 5 concurrent list से जानिला जे ए पिलाटा गोटे टॉप क्लास पिला नेक्स्ट लिखो however there are overarching propositions asun sir asun however there are overarching provisions however आप पढ़े पाइछन तो सर बसो however there are overarching provisions both in favor of UCC in article 15 article 44 14 and 15 and against within bracket article 25 to 28 full stop. Besides northeastern states like Nagaland and Mizoram are exempt from central laws in respect of their personal law. 371A और 371G टी लिखंतु सर हाथ तो हलांतु सर 371G ए हला तमरो ओपनिंग माडो जेमते रोहित शर्मा पिटुची एटा सब माडो हला से आसरा माडो करकरी दी पट साइड 6 फिक्स मारिकरी से सफा कला एमते कला कि तमरो ऑलरेडी 3 मार तो मीटर तो से मीटर तुम बहुत ऊपर मीटर चल बुझलो तो समते को सार टिक बहुत हाई लेवल पर अरे हाई लेवल रे पढेले से हाई लेवल मार्क आसीबो आ नले जदी पढिबो जदी इनते एवरेज पढिबो आर्टिकल 44 सेज हबनी सर हबनी बुझी पड़तो कथोडा तो तमन काहे कोचे आसो बोली ताले तम माने गोटे टॉप क्लास आंसर कर हिला हिला पाठ तापर लेखो सेकंड पर आसीबा while लेखो सेकंड पर आसीबा while the Hindu Marriage Act 1956 rules out polygamy and is subject to section 25 of CRPC of section 25 of CRPC, comma, the Muslim community is guided by Shariat law, which promotes polygamy and unilateral divorce. Promotes what? Polygamy and talak. Unilateral divorce. केमती लागुच तुम आंसर भल लागुना सोडा नहीं रे भल लागु रे नहीं एमती लेखिले जाई करी मार्क मिलिबो यूनिलैटरल डाइवर्स है ना तब लिखो इंसिडेंटली प्लीज नोट डाउन इंसिडेंटली द स्टेट ऑफ गोवा has been following UCC
UCC since 1941. Since 41 Portuguese वाले थे तापरे से माने गला परे 61 परे भी सेठी चलीछि एमती भी गोटे देश अच्छे हमर स्टेट अच्छी जो ठीक अच्छी है ना सो फुल स्टॉप तापर लिखियो उत्तराखंड has already introduced UCC which excludes tribals सब बड़े तमरो आंसर रे डीप कंटेंट रहा दरकार बुझो तो डीप कंटेंट रहा दरकार हला डीप कंटेंट न रहले जम्मा मीटर ओडियोनी which excludes tribals and the prime minister please note down the prime minister looking at the sensitivity of the issue has called for a secular civil code. A secular civil code. It would therefore be useful to look at the role of the Supreme Court in this regard. It will be therefore important to look at the what? Role of the Supreme Court in this regard. एत्ते कला परे तापरे हमें सेकंड पेज को जीवा गोटे जिनस मन रखिबो ए जो आंसर करछि हला बहुत ब्रीफली करछि इट मे नॉट फिट इनटू 250 वर्ड्स बेसी जा पारे किंतु तम पाखरे तुम जो नोट करिवो प्लीज एगोटा गोटे तुमको बेसिक फंडामेंटल करछि तुम जो नोट करिवो सेटा 500 वर्ड करिवो जोटा कि तमे परीक्षा बेले 250 वर्ड तो कन्वर्ट करिवो बुझो तो तमे जो नोट ता करिवो सेते कार्पण्य करिवो मेक वन पेज नोट हला जेते जो परीक्षा पूर्वरु तब जे सेटा थिबो सेटा तमे प्रैक्टिस करिवो ताऊ कम करिया पे किंतु तम माने केबे हेले फैक्ट सुडा को कमी करी नाई सर 250 वर्ड रे मते एते कथा काहे लिखिबी बुझि पड़छो तो सो प्लीज What do you mean by unilateral divorce? कोनटा Unilateral divorce. Diverse adoption now inheritance. No, sir. Actually, I want to know about unilateral divorce. What does that Unilateral mean? divorce माने तलाक. Say तमे without looking at the consent of your wife, तमे कहो तू जा. अच्छा. हाँ, yes, sir. जा, तुम जाओ कल को आसोनिया घर को जाओ तुम जाओ. माँ तमे जाओ. ते कुआड जीबी माँ जीबी कुआड जीबी. सेथ में हमर ओटा सेक्शन 25 अछि. प्लीज नोट डाउन. तुमको दी माँ को बाहर कर दला देयर इज अ सेक्शन 25. प्लीज नोट डाउन इन दिस सीआरपीसी सेक्शन 25. हां ले से चेंज हो मु पुराना लोगटे पुराना कथा टे कहूची टिया ना तमे तो ताको जहां नुआ हिची नुआ कर दो तको सेक्शन 25 ऑफ पीसी सेक्शन 25 ऑफ सीआरपीसी इज वेरी इंपोर्टेंट. प्लीज नोट डाउन कोनटा सत्र कहूची से कहूची जे तम स्त्री तमे द डाइवोर्स हला and she has not married. Please note down. She has not married. And she is in an indigent condition. She is an indigent condition. Man tara रोजगार फजर किछि नाही गरीब अछि चाकरी बाकरी नाही किछि काम करू तमे धर ओएस फोएस पाइछ तमको किछि मिलियो ने सेक्शन 25 से कोई इट इज नॉट इंडाइजेंट कंडीशन you are unlike to get under section 25 से कहबे ना ए छाड़ भलो दरवा पाउछ ठीक अछि त गोटे जगह जगह खटे दे दियो कि घरटे दे दियो but you will not please remember the condition is indigent condition you have to be unmarried after divorce and so ए गुडा करे तमरो बर्तन होछ एक्सेस होछ anyway चला please note down the most important Supreme Court judgment everybody knows is the Sahavano case. Please note down. एटा लिखले तुमको किछि अधिका मार्क मिल समस्त सावनो
But you have to bring out what is the essence of the Sahabanu case. Essence of Sahabanu case, please note down that an all India law will overrule a personal law. All India law will overrule personal. All India law कौन हला? Please note down. प्रथम हला constitution. तमें कहबनी सला मु मानिबिनी. No. You are subject to the constitution. Whether you are a Muslim or a Parsi. Second हला CRPC. देखो CRPC. Third हला CPC. Civil Procedure Code. So all criminal matters, please note down, all criminal matters, जो थे के CRPC व IPC, please note down, CRPC, IPC, और CPC हला तमरा civil procedure, जमी हला, tax हला, all these are CPC. तापरे संविधान. एक गुड़ा करे, they have applicability for everybody. Now, before this judgment, people were thinking that a personal law cannot be superseded by a CRPC. Please note down. It hala issue. Personal law ta kono supersede kori paribo ki? Ei kathata ko Chandrachud, jo Paji Dhananjay Chandra's Bappa, YB Chandrachud, he gave a judgment saying that no. So CRPC will prevail over. It will prevail over what? Over personal law, Shariat law. And he also suggested that Article 44 should be implemented. Say lalkar dala state ko je tame karo. Ei kathata Rajiv Gandhi kolani. Instead, he brought out a law. Please note down. He brought out a law called the Muslim Women Act of 1986. So he did not allow CRPC to apply to Muslim women. माने से गोटे नुआ बिल करी किरी ताकू रफा दफा कर देला. So many people believe ए जो कामटी से कला जो he lost respect of liberal Muslims and also Hindus. वोट पाया पे से ए जो कामटी कला से भावराज रे ना साला मुसलमान तक वोट देले ना तार नाती को साला पो को वोट दो कहा किसी मुसलमान दो ना कि मुलायम सिंह खाई जाऊ कि साला की खाई जाऊ अन्य माने खाऊ से मुसलमान कई वोट दो ना तक पूछो तो it was a big blunder that he committed. Anyway, सब लोग को ब्लंडर तो करते केतବେଳେ किए ब्लंडर करिवे मोदी साहब भी केतବେଳେ ब्लंडर करिवे एमिति ब्लंडर करिवे जे कुआडे रहया पे जगह थिबो कोन कथा पूछो तो. So please note down the second judgment, please note down, is Sarla Mudgal case. Please note down Sarla Mudgal case 1995. एति खाली लिखियो जे after in the Sarla Mudgal case, they said what Sahabanu case had said. Same thing. Seven colleges, UCC should be. So Supreme Court of viewpoint, jo kahithil tumko, judgment of viewpoint hala, it should be enforced by the state. It hala Supreme Court of viewpoint. There is no different viewpoint in the Supreme Court. But the difference is coming from Law Commission. Please note down. The Law Commission in 2018 is saying that it is neither necessary nor desirable. Please note down at this stage. एबे ठीक होनी हबनी सर बहुत गंडोले हबो at this stage. Are you all following me? So please note down
there are also legal experts who believe that instead of bringing UCC, the discriminatory practices, please note down, the discriminatory practices in Muslim personal law should be done away with. The discriminatory practices should be done away with, like inheritance. Like inheritance. Done away with. जिते गोटे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस रोची स्त्रीलोक विषय हिंदू स्त्रीलोक मुसलमान स्त्रीलोक भितर जो डिस्क्रिमिनेशन रोची जो लॉ रे जो डिस्क्रिमिनेशन रोची दे शुड बी डन आर यू आर गेटिंग इट सो बुझी परछो तो गोटे हला फॉर गोटे हला पूरा अगेंस्ट रे आ गोटे हला मिडिल व्यू पॉइंट आर यू आर गेटिंग इट सो व्हेन यू गिव एन आंसर प्लीज ब्रिंग आउट how there are three positions on this. There is not a position. किछि कहउचंती नाही पूरा यूसीसी न आनी करी आमे टे डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस तलाक 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 जेंति को मना कर दे प्लीज नोट तलाक 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 दैट्स अ गुड थिंग दैट द गवर्नमेंट हैज डन आमे सेटा को भाबियोनी छोड़ा मोदी सरकार ना इट्स अ गुड थिंग दे हैव डन particularly in inheritance. Please note, this is very, very important. Inheritance. Inheritance issue re puo jha saman rahibe tomoro claim in your paternal property, in your husband's property, that should be there. Okay. Now, please note down, in India, you have a Protection of Women from Violence, Domestic Violence Act of 2005. Please note down. माने आमर जो लीगल प्रोविजन अच्छी ता भीतर भी प्रोविजन अच्छी जोड़ा को which is cutting across religion. Please note down. एमिते नाही जे तमे थोड़ा मुसलमान स्त्रीलोक माड़ खाइलो बोली तमे यदि थाना को जीवो तमे पर्सनल लॉ विल कम टू अरेस्ट. Please note down. This is very important. माने how far this is being enforced, that's a different issue. Kintu purely on a legal basis, whether you are a Muslim woman or a Hindu woman or a Christian woman, the domestic violence tame kolo, pitapiti kolo, akhi kola kolo, tale tumko police jail maribo. Kabucho to. So that basically means, please note down, this is the most important thing. This basically means in the lies of law, you should be treated equally. Equality before law. And no discrimination. 14 and 15 jota se kahitela seita 100% must be ensured. Se Musalman ho ki Hindu ho Christian. Okay, Parsi. Okay. So defense re kon hala? Kon defense hala? Constitutional provision hai gala. Prathame hai gala constitutional provision hala. Tapare Supreme Court judgments hala. Tapare for re kon hala? For equality before law, gender equality, please note down, national integration. It will also help in national integration and what? True secularism. Please note down, true secularism. When I am the prakriti gote secular desh boli kahiba, tale dharma bhitere a farak anibani. Saman. We should treat them equally. जदि हज रे श्रोता को पैसा दिया होची हज को फेयर दउची ताले हिंदू मन को भी दो पड़े सो यू हैव टू ट्रीट देम इक्वली सो दैट्स नॉट फेयर a fair तापरे अगेंस्ट रे कोन होची इट इज अगेंस्ट राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी कल्चरल सेंसिटिविटी एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तीनटा कथा असला कोन अगेंस्ट असला राइट्स ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी जोरा 25 और 28 कहली है ना कल्चरल सेंसिटिविटी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एवढा कहला तुम्हारा अगेंस्ट नाउ कंक्लूजन कौन कंक्लूजन करिबी ताले मु प्रथमे कंक्लूजन करिबी जे आमे we must not go for cultural homogenization. Please note down.
we must not go for cultural homogenization, but must amend discriminatory laws and laws which promotes discrimination in the matter of marriage, diverse and inheritance तापर आम गोटे कथा निश्चय कहि परिबा जे हमर टुडे इंडिया इज there is an apprehension that we are becoming a polarized country. We are getting polarized. So therefore the best course could be to remove the discriminatory laws and not force a UCC. Jimte Uttarakhand re tribals man ko exclude karchanti. So somebody would say no se chalugiri kala. No, it is not a chalugiri. It's a very matured thinking. Je tome you have looked at the sensitivity of some people. Je tankar the tribal customs would alga. Chota northeast kotha utra. So एमते आंसर तो किन थबो टी आंसर ठीक है कि सर संग्राम तुम ठीक लागले कि नहीं ना खेचर फेचर नहीं माने मु खाली सुनो मु कोनी जे मु टी मु तुमको ज्ञानटा केमिति ठीक भाव लिखिवा कथा सेम टी कॉलेज जाय कि तमटा को केही तुमको आउ कमे पारिबे नहीं द्वितीय आंसर को आसीबा हला तुम एटा ठीक हला कि नहीं अरे तुमरा ठीक हला कि नहीं तुम को आमे आसवे तापर गोटे आ गोटे लिख to what extent parliament is able to ensure accountability of executive. It is a difficult question. To what extent? The question to what extent Parliament is able to ensure accountability of the executive in India? देखिए किए गोटे कौन केमती कहूँ देखिए कौन देखिए केमती कौन किए तुम कहूँ तुम देखा टे सब ज्ञानी मान गोटे देखा टे 1 minute सर बहुत डेइंग 10 ओवर है नहीं पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी ऑफ प्रथम कौन टा आनिबा हमें मु गोटे प्रश्न तो पचार जीटा ठीक कहबो ताको 100 टका मु देबी Is there any provision in the constitution which talks about accountability of executive to parliament? Is the answer question again I am asking this question to all of you jo mane so online acha. Is there any provision in the constitution which talks about accountability of executive to the parliament? Court achi sir C&AG give him a big hand ठीक अछि. So CAG as an institution, you are saying that it is making executives accountable. C&AG डाकी कि तुमको कहबो जे सर आपण जो ठिया हंतु माने गोटे गोटे ठिया हंतु बोल कहबेरियो तो आसी फिर तुमको आसी ऑडिट कला ऑडिट करी कि भलो आंसर करछ किछि खराब आंसर है नहीं
किसी खराब आंसर है सीएनडीजी ऑडिट करूची ऑडिट रिपोर्ट दबो ऑडिट रिपोर्ट करके तुम से इंडाइट कर परिबो कैन ही इंडाइट यू जे तुमको कर परिबो प्रेसिडेंट को दबो तापर सेना पार्लियामेंट रहबो सो कौन से रिपोर्ट दबो कौन रिपोर्ट दबो वेरी वेरी गुड आंसर सर ठीक कौन सर कहते कौन सीएनडीजी रिपोर्ट दउची कौन रिपोर्ट दउची कोनटा तुम सब कुआडे सब अच्छो सब लेख तुम सब खाली ऊपर खाली से खाली आउट हबो पिच बाउंस कला खाली आउट हबो से जेम विराट कोहली होची आउट खाली आउटसाइड अफसर कैच न ये सब जो दुबई पिच नुह जे तुम खाली मार दो बोली उठियो बॉल जतल ना करके खुटकिरी खसबे से तो सेम ठीक जमते हमर विराट कोहली खेलुची रसले रे को कौन सीएजी के सर कहले कौन सर सीएजी करूची सर सीएजी तीनटा रिपोर्ट होची कोन सब गला तमरा गोटे हला तमरा ऑडिट रिपोर्ट्स प्लीज नोट डाउन प्रति वर्ष इट इज रेंडरिंग ऑडिट रिपोर्ट्स प्लीज नोट डाउन it is also giving a report called a performance audit गोटे हला ऑडिट रिपोर्ट सेटा होची फॉर द डिपार्टमेंट एज अ होल जो डिपार्टमेंट तर पीएनटी गले इनकम टैक्स गले जोटी गले ताको गोटे ऑडिट रिपोर्ट देबे कौन से इरेगुलारिटी करछन बुझो तो आउ गोटे हला से माने परफॉर्मेंस ऑडिट करछन्ती दे टेक अप अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट whether they have observed 3 E's माने economy please note down economy efficiency and effectiveness please note down economy efficiency and effectiveness जो ये प्रोग्राम टा धर मिड डे मील प्रोग्राम 5,000 कोटी खर्च करछे से देखिए कहबो से रिपोर्ट कहबो जे whether it was economic whether it was efficient whether it was economy efficiency and effectiveness about a character number आछि called environment whether the program is environment friendly please note down this is also a new dimension today in the audit report एगुडा हला परफॉर्मेंस ऑडिट Hello. There is no provision in the constitution about how the executive should be made accountable. There is no provision. कौन पूछो तो आमर जो सेपरेशन ऑफ पावर अछि प्लीज नोट डाउन आमर जो सेपरेशन ऑफ पावर अछि ए सेपरेशन ऑफ पावर रे एग्जीक्यूटिव रहला लेजिस्लेचर और जुडिशियल रहला हला ए जो तमर जो रहला प्लीज नोट डाउन ए जो रहला एग्जीक्यूटिव रहला प्लीज नोट डाउन इट इज हेडेड बाय अ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव व्हिच इज द मिनिस्टर प्लीज नोट डाउन a minister is also an executive please note down minister ले बसती ता चेयर रे से मंत्री नहीं से पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अप्रूवल से दोछ ता परे तमे सब रहला एग्जीक्यूटिव्स सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी सब तुम रहला एग्जीक्यूटिव्स हला द क्वेश्चन इज not accountability of political executive but accountability of executives working under political executive. The question is not about accountability of political executive. The question is about accountability of the executives working under the political executive. मंत्री अंडर रे जे काम करूची तमे भाबनी कि सर मंत्री तो करे मु कोन कली ना तमे थिलो से तहसीलदार थिलो तमे सेठी कलेक्टर थिलो तमो ऊपर अठाटा आसे अठा विल कम टू यू
ହେଲା ଆଉ ସେ ଅଠାଟା କୋଉଠୁ ପାଇବେ? So this is what the question is asking for, and it is also trying to find out whether it is effective or not. Please note down. ଆମର ଏଇଥିରେ 8 ମାର୍କ ଆସିବ ହେଲା କେମିତି ତାର ଆକାଉଣ୍ଟବିଲିଟି ଆଣୁଛି, ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଏଟା ଏଫେକ୍ଟିଭ କି ନୁହଁ। ଆରେ ବୁଝଛ କି ନାଇଁ ମା, ତୁ କଣ ସବୁ ଭୁଲିଗଣି ସବୁ କଥା ଗୁଡା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଥା ଗୁଡାକ? ସୋ ଆମେ ତ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ସେମାନେ ତ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଜେରା ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଠି ହଉଛି, ସେଟା ତ that is the accountability of the minister to the people of the state. Please note down, this is very important. ବଢିଆ କଥା ସେ ପଚାରିଲା, जो assembly जो question होची, question hour session होची, that is where the minister's accountability to people. Sir, no confidence motion, Article 75 clause 3 and impeachment also. अरे सुनो सुनो गोटे हला मंत्री को आमे क्वेश्चन पचारुचे, so people, so they, since they are people's representative, they are accountable to people in the assembly or in the parliament. The ministers are accountable to the people. When a MLA is asking a question to the minister, he is asking on behalf of the constituency. तुम जो आस्का constituency आछो से पचारुचे छा हमर सेठी पांचटा पिलांकर झाड़ा होय जायला के मेडिसिन देलेनी, मंत्री कोन करथले? हेल्थ मिनिस्टर कहबे सर मु या करथली या करथली, मु पहुंच गली हम गली सेठी पिला को देखिली, ताको देली बटिका देली, ओआरएस देली, फोटो अछि मो पाखरे। Please don't confuse that. Parliament session, madam, जो no confidence, these are all accountability of ministers to the people at large. अरे they are people's representative ना, किंतु जो तमे जो तहसीलदार तमे एसडीओ हेछ तमर कोन accountability एटा होछ question. There is no provision in the constitution. Please note down, there is no provision in the constitution. This flows out of, please note down, rules of business in the Lok Sabha. So I will now dictate one sentence which will give you the opening sentence. A question draw. The accountability of executives. देखो, अरे बुझी पड़छो कि नहीं? The accountability of the executives is by virtue of the rules of business of the Lok Sabha, which mandates constitution of PAC, estimates committee and committee on public sector undertakings. Full stop. In these three committees, the audit report of the CNDG is studied by the parliamentarians who pick up a few audit paras, and then examine the concerned secretary of the state stroke center
the reasons for malfeasance, misappropriation, and inefficiency. Please read it out. A sentence sare so एथरे मु कहू चाहूची जे हमर जो पार्लियामेंट्री गोटे रूल्स ऑफ बिजनेस अछि सेइथरे कहूची जे 3 committees would be formed. से कमिटी रे अधा लोक रहिबे रूलिंग पार्टी रो अधा लोक रहिबे ऑपोजिशन पार्टी रो हला आ तांकर काम हला ए जो बुझि परछो ए जो ऑडिट रिपोर्ट रहला परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट सेइथरो सम पारास दे विल पिक अप जो थरे इरेगुलरिटी उडा को देखाई छी तापर सेक्रेटरी को बसे करी चा पानी पिए करी बिस्कुट खुए करी ताको सेठी धीरे धीरे ताको वस्त्रहरण करिवे. Have you understood? Have you understood? हाँ कोटा Political executive and permanent executive के separate करके कुछ स्टैंड करते कौन पे मु कहले आंसर ता काहे कि मु तमे मन मन भाबु तो जे सर मोर तो पुढे आंसर ता हितिबो पाइबो तमे 2 मार्क पाइ एटा एको दीपक भी जणा नथि दीपक माने साइंस पिला से कोड जानि में कथा उडा तो बुद्धि पड़छ कथा उडा हैव यू नाउ अंडरस्टूड नाउ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव एटा होची परमानेंट एग्जीक्यूटिव जो ताको जो गाड़ी ताको जो जेरा करा जाउची से माने रिप्लाई दै I have faced at least 12 such committees. बुझलो तो कलम पछरे बसी दनादन माड खाइबो कलम माड तो पछरे तुम खाली खाली सुनिमो तमे ताऊ चीट पढेओ तमे कहि परिबोनी डिसीजन गाड़ी माने इट्स अ हॉरिबल सिचुएशन मु डिफेंस मिनिस्ट्री रे पर 12 थरो बसी मित्र करते सो देयर तापर से माने सब रिकमेंडेशन दे तमे त रिप्लाई देबो सेही तरह से माने बड़ो स्ट्रिक्ट सब डायरेक्शन देबे सो बुझो तो कथा सो ऑडिट पर रे कहबो एटा करले बोली पैसा खर्च बेसी हे गला कि तमे बदमाशी करछो मिसअप्रोप्रिएशन करछो आर यू आर गेटिंग मी सो दिस इज द आंसर बुझी पड़छो तो हैव यू अंडरस्टूड नाउ लेट अस गो टू दैट आंसर नाउ इट इज क्लियर टू हाउ पोजीशन बड़े ना मिसी पर आधा आधा दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट धर हां हां मैंने धर गोटे एटा एटा बढ़िया क्वेश्चन पचारछि बढ़िया क्वेश्चन ए नोट कर एटा भल क्वेश्चन पचार PSC रे प्लीज नोट डाउन PSC is invariably chaired by the opposition member PSC रो चेयरमैनशिप होची opposition member अब केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस रो से होची चेयर the estimate committee is generally headed by the ruling party please note down and the committee on public sector undertaking tell you upre hala ki air india upre hala that is headed by again an opposition this is the convention eta again rules of business ro achi बुझि पड़छ तो कथा कोन कहले सर हां सब तो सर एमती अकाउंटेबिलिटी अछि सब इन बस गुड माने द बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पचार से वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है माने इन अदर कंट्रीज द सीएनडीजी रो जो काउंटर पार्ट अछि तांकर जुडिशियल पावर अछि फॉर पनिशमेंट प्लीज नोट डाउन इन इंडिया वी द कमिटीज डू नॉट हैव power to punish please note down it is not a quasi judicial body please the difference between France Germany and India or US even they have quasi judicial power देखले सर आपण पैसा खाई देई छथि आरो वासला जे आपण सर पैसा खाई देई छथि सो सेमन कहबे ताको चाकरी बाहर करा जाओ कि ताको धर जो कोल स्कैंडल कि कोल ब्लॉक एलोकेशन हला 2G स्पेक्ट्रम हला तापरे तमरो जो एशियन गेम्स रे बहुत गफला हेतला सो दे विल नॉट से ताको जेल पठाओ कि तो करो सन कहबे एउडा को सब एक्शन नियो बोली दिस इज द डिफरेंस ए बिटवीन इंडिया एंड द अदर कंट्रीज डिफरेंस इज
that see to coach effectiveness to second part of the question coach, it is not as effective as Western countries. Please note down. Note correct. Because it's a tricky part of that question. Je kette effective hochi. Jera to hochi, jera hela pare kon tar impact hochi. Because we are not able to impose exemplary punishment on them. Therefore, many times that seriousness about the audit parish or the committee is lost sight of. अरे बुझु कि नहीं तमें जदि सेठी तुमको जोता हे गला तुमको ताले तमे आउ केबे सेंट करिवनी तमे जे जानु जे नाही ठीक अछि कि एक्सप्रेशन दे के खसी जवा हमें बोली खसी जवा ताले तमरो डर रहबो कियो कि तो तथापि डरंती बुझले कि तथापि एस्टिमेट्स कमिटी उरा के सामने रे पब्लिक आर्ट्स कमिटी रे बेस माड़ पटापटी माड़ खाइबा चांसेस बहुत चांसेस रहे however powerful you may be se mane to बहुत सेठी सरप्राइजिंगली ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी मिसिकरी तुमको अटैक करे माने जो कहते नहीं मई से सिंगटा फटा जोजरा बेले गोटा सो एग्जैक्टली सेटा सेठी सिचुएशन so you find surprisingly very united forum there मिसिकरी जो सरकार को माडो करिवाटा मोर एबे भी मने अछि मुरली मनोहर जोशी थांती गोटे पीएससी रे थांते चेयरमैन था भारी बुद्धियार गोटे फिजिक्स लोक सी कोन हेता ना हमरे जो डिफेंस सेक्रेटरी के सब बस्ता ना पछरे सब से वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोटे थिला अरुण प्रकाश मो पाखरे बस आमे वी आर नॉट सपोज्ड टू स्पीक अनलेस यू आर परमिटेड बाय देम टू स्पीक माने तमरो माने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट देयर इनसाइड केवल एक्सेप्ट द सेक्रेटरी तमे गोटे स्लीप दे परिवो कि तो तम जते पार्टी पुलपुल होतला मते कहि परिवोनी बिकॉज़ दैट वुड अट्रैक्ट कंटेम्प्ट सो सी कोन हला अरुण प्रकाश पछरे बसतला मो पाखरे बसतला सी गोटे को इशू पर कहला नो इट इज नॉट करेक्ट बोली कहला सो बोली मुझे कहला हु इज दिस फेलो सो डिफेंस सेक्रेटरी बसी पड़ो स्ने किंतु सला महा ना इट इज ऑल इनकरेक्ट दिस आर इनकरेक्ट एलिगेशन बोली कहि से पार्टीनो कला से बड़ मोर एबे भी मने अछि से मोरली मन कहला वेयर इज द मार्शल से दीटा आसी सला मुछो लगे कि थोड़ा सी कहले प्लीज एविक्ट हिम इमीडिएटली इफ ही इज नॉट स्टॉपिंग बहुत कष्ट रे ताकू सला मार्शल बाहर को नेरा से दिनठू मु देखि कि एटा आउ जानिली जे एठी बड़ असुविधा कथा एठू बड़ असुविधा कथा सो बहुत इतरे इंटरेस्टिंग घटना हेची आउ मु मुरली मनोहर जोशी संगरे एई गोटे पार्लियामेंट अकाउंट्स कमिटी से बहुत माने बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर देइथिली बोली से कहले बारे वेरी कनिंग फेलो ओ बुझले से कोने गोटे पर्टिकुलर केस रे जो इरेगुलरिटी से देइथिले से इटली केसटा थिला से माने फसौतले इधर सोनिया गांधी हाथ अच्छी बोली फसौते बुझले कि सेठू कलाम कहला मते केसटा को जो माने जानी परनी कोन ता कहया था मुके सर अपन व्यस्त होंदे आप खाली परमिशन दन तो मु आई आर्ग्यू फॉर दिस सेठू मुरली मनोहर जोशी कहला जे सर ही मोर डायरेक्टर फाइनेंस ही विल एक्सप्लेन बिकॉज़ ही हैज हैंडल्ड द होल थिंग मु त पर ठिया आके कहली मु तो पावर किछ नथला मु तो ठिया आके कहली मु के सर एम घटना Sikla, are you very sure that there has been no malfeasance in this case? Mukli sir, are you also very sure there is some malfeasance? Sikla, you are a very cunning fellow. Okay, we are dropping this para because of this cunning answer. Mukli sir, please drop the word cunning. He said, okay. Mukli sir, cunning word should not go. I am objecting to that. So एम देखिर बहुत मजा माने ताके से किंतु सुषमा स्वराज फॉर इंस्टेंस बहुत पछरे ऑपोजिशन बहुत शी यूज्ड टू बी वेरी गुड बहुत भलो शी वाज वेरी गुड इवैक्यूएशन बहुत माने पानी पिए तो एकदम से पूरा एकदम एंड दे डू ऑल द होमवर्क एनीवे सो बुझी पाला कथा तो
So now let us see the answer. एटा इजी कर दिली तबु माने एटा थरे कहि देला पर किछ नाही नै कि हेलो सर एक क्वेश्चन थिला हां सर कोन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव मान को एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी थाए सेटा अकाउंटेबिलिटी केमिति ओडिसा बुझा पड़ोनी तो बुझा पड़नी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव मान करो एनोनिमिटी आउ न्यूट्रलिटी हां सेटा तांकरो अकाउंटेबिलिटी पर केमिति पड़से बुझा पड़ोनी से माने जेन्युइनली अकाउंटेबल होउचंती पार्लियामेंट को ना तांको बड़ ऑफिसर को नहीं but it's a very interesting question. You have asked a very interesting question. प्रथमे नोट करो जे it comes under rule 308 of rules of business in Lok Sabha. तो आंसर तो प्रथम देथिली सेथरे as per rule 308 कर दो आरंभ कर दो as per बुझ परछो तो से आंसर रे just redrafted to say as per rule 308 of rules of mu tum answer karibi I will answer your question as per rule 308 of rules of business in Lok Sabha it mandates please note down it mandates constitution of PSC estimates committee and committee and public sector undertaking to look into ei jo kathada सब कहथिले मन पुरते रहा जो प्रथम आंसर टा करथिली खाली अरे गेट मी पॉइंट जस्ट redraft the answer as per rule but there is no provision there is no explicit provision in the constitution for accountability of permanent executives by the parliament however rule से आरंभ करो there is no explicit constitutional provision for accountability of permanent executives, not executive, permanent executives by the parliament. However, as per rule 308, rules of business in Lok Sabha, 3 committees are formed, that is PSC, estimates committee and committee on public sector undertakings. Okay. Now, who in turn take up a few paras from the CNDG's report. जा कहितली सेटा तमरा आंसर तापरे प्लीज नोट डाउन पीएससी रो कामटा जरा जो नहीं जाता छवि नहीं जा कारण दिस आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज पीएससी रो काम हला तीनटा गोटे हला मनी स्पेंट लीगली अवेलेबल एंड फॉर द पर्पस इंटेंडेड ता माने whether it was appropriated in the budget रे सेटार appropriation अच्छी कि नहीं please note down every ministry please note down every ministry gets an appropriation ए जो 36 लाख कोटी टका अछि कि 56 लाख कोटी टका अछि प्रत्येक मिनिस्ट्री 101 टा मिनिस्ट्री अछि प्रत्येक मिनिस्ट्री गोटे appropriation करा जे पार्लियामेंट अप्रूव करूछि कि तबे एते खर्च करियो so they will first see whether it was legally available or not. Secondly, for the purposes intended, तमे मिड डे मील स्कीम अछि तमे खर्च कर दलो घोड़ा किनी मारे रोड बने मारे no. Then whether the authority is competent or not, please note down whether the authority is competent or not, please note down जे amor in the present scheme of things the financial powers now this will answer your question whoever was there in the online as per the transaction of business rules please note down as per the transaction of business rules as per what transaction of business rules 1961 1961 मसिया रे गोटे ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स गोटे डॉक्यूमेंट अछि ए डॉक्यूमेंट कहबो जे कहार कोन पावर अछि प्लीज नोट डाउन जे मंत्री रो केते पावर फाइनेंस मिनिस्टर कोन पावर और कैबिनेट रो कोन पावर प्लीज नोट डाउन देयर आर 3 सेट्स ऑफ पावर
there are 3 sets of power as per the transaction of business rule. 500 कोटी पर्यंत फाइनेंस मिनिस्ट्री अप्रूव कर पारे 500 कोटी ऊपर इट विल गो टू द कैबिनेट 200 कोटी पर्यंत मंत्री कर पारे रफली सो दी जदि देखला ऑडिट देखला ये मंत्री has approved something above 200 crores जेउटा क्वेश्चन कला so the minister would be accountable. Are you getting my point now? जे if the minister has exceeded his powers से थाने कोचे competent था तमे जेतेबेला अंडर सेक्रेटरी रहबो कि डेप्यूटी सेक्रेटरी रहबो सेक्रेटरीट रे तमे नोट पुट अप करूचो these are the few things you have to point out. A, whether there is this fund is available and who will be the competent authority. Secretary कर परिवो कि chief minister कर परिवो कि minister कर परिवो you have to bring it out. So if the audit finds that no तमे करिनो ता परे प्लीज देखो most important कथा हला elimination of waste and inefficiency. खाली appropriation नहीं competence नहीं, it will also see whether the money has been prudently spent or not. एटा होची तमे प्लीज मन रखो PSC generally picks up paras which talks of financial irregularity. Please note down. All paras chosen by PSC basically refers to irregularity, financial irregularity. Financial irregularity जो पर रे थिबो सेटा को ही PSC तुमको पचाए. आउ धरो loss. Please note down financial irregularity and loss. जदि लागिला जी तमे गोटे तम जो लॉस हेची बोली ताहले तुमको से धरिवे. ये जो भत्तहरी महताब नहीं अरे जो एमपी अच्छी तुमरो कटक से थरे थिला सळा ए जो पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमिटी थिला से कोन हेची ना से धरला हमको गोटे थरे एयरफोर्स से हम धरला जे हमर मु एचएल रे जॉइंट सेक्रेटरी थिली से गोटे सळा हमर गोटे एएलएस तार एक्सीडेंट हे गला दीटा खंड एक्सीडेंट हे गला. सो ऑडिट कहला जे तमे एटा को टाइमली रिपेयर कॉलोनी बोली से इथमेटा फेल हे गला सेटा एक्सीडेंट हला तो से पूरा एचएल ऊपर पूरा तेलो मार दला पूरा तो. अच्छा मु ताको जानि नथली मु जानितली सा ओडिया लोकडा से जानि सा मु ओडिया बोली बुझल कि से साके तो बहुत थरो करिगे इज वेरी वेरी थरो फेलो बहुत थरो मु ताको भलो कर जानि से मो क्लासमेट तो जानि छी भलो करी से दिल्ली पुरता मु जानि त मो क्लासमेट से किंतु बट हियर डन इज होमवर्क से एमिति बजेला बजौ थाय चेयरमैन एचएल को कहिबार नै माने चेयरमैन एचएल ऑलमोस्ट भाबिला छला ये ताको मोटो होते पता कि फाइन फाइन करतो कोन करिवो से दीटा एलएच रो पूरा फेल्यूर ताको ता ऊपर पके देला पूरा सेठू मते से बायोजा थाए चेयरमैन बायोजा थाए सेठू कहला अरे मिश्रा जी कुछ बताइए ये तो पेल रहा है मेरे को बहुत बुरी तरह क्या करें चला बहुत ही मुश्किल कर रहा है तो मुझे लिए ठीक अच्छे सेठू मुता कहली मिस्टर महताब this conclusion that you have reached that it was not subject to timely repair is an argument which doesn't cut any ice. मुकली टाइमली रिपेयर माने कौन जे प्रति 250 घंटा परे तमे रिपेयर करिवो. सो अरे एलएच 100 आवर्स भी करनो थिला. So it was a failure. So the whole issue is whether it is a man-made failure or a technical failure. How have you come to the conclusion that HL is responsible for this? माने विभिन्न संस्था अछंती किए बनेची किए चलोची बुझलता. So मुकली for you to get after HL is palpably unfair. Asa. So what I am trying to say मु सेटा को जो पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी टेस्ट पढोची प्रथमे ताको करदिली तंकर कोनटा प्रथम कोनटा थिला यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जोटा सर अपन छाडी के जाइथिले सब कष्ट प्रश्न जो पढाइथिले
So ସେଇଟା କୁ ମୁଁ ଆଚ୍ଛା so ତାପରେ they will also look at the performance audit report. Please note down, they will look at the performance audit report. Of late, please note down, the reports which are getting lot of attention are the performance audit report. Jim tomorrow coal block allocation hala, 2G spectrum hala, Asian Games hala, ei jo reports hudako, those reports are not audit reports. Please note down, these are all performance audit reports. So we are making a distinction, please note down, we are making a distinction between what? Audit report and performance audit. Audit report hala for the department as a whole. Kintu performance audit. So say when supposing you are the program director, like for instance in ADA, Aeronautical Development Agency, so there was a LCA, light combat aircraft. So at the time of flight demonstration, it had a crash. So there was an audit report saying that it was a failure of ADA. So all people who are associated with ADA, were made accountable. So the question here is that it is not the defense minister who is being made accountable, but it is people who are associated with the program. Everybody, it is, so please remember, it is not confined to the civil servants. Please note down, this is very, very important. Accountability of executive is not just civil executive, it can be also military executives. Amar jo concept of accountability jo kohuche, this accountability to bhabani je kebol se IAS lokunkar ajboli ki OS officer, no, all those who are involved with the program. Are you all getting me? Are you all getting me? तमे कहबनी सार तो देखिबे मोर कोन अछि, तमे भी फसिबो, तमर भी एक्सप्लेनेशन मगा जो सार कोन करथले आपण. सो एटा होची कथा. तापरे प्लीज नोट डाउन estimates committee, please note down, estimates committee ro काम हला देखो तार प्रश्नटा, the question is that basically they want to know, so PSC is headed by a member of the opposition, 15 plus 7, but it is invariably headed by the opposition leader, an opposition member. But the estimates committee, please note down, is headed only by a member from the ruling party, and it has 30 members. It has how many members? 30 members. Okay. Estimates committee ro kamo hala, wherever the expenditure, please note down, wherever the expenditure is more than plus minus 10, wherever it is more than plus minus 10, they will ask for an explanation. If you have overspent, if you have overspent beyond 10%, or you have surrendered funds, please note down, surrendered funds, so you have to give an explanatory note. Kahin kimti hala? Dara tomar kinimar achi, dara midday meal scheme hala. Midday meal scheme re tome surrender kala paisa. पचारे तुम कहीं सरेंडर कलो, एते सब पैसा कहीं सरेंडर कलो, तापर से माने पचारे एथरे कोन अफेक्टेड हला, चाइल्ड हेल्थ किछ अफेक्ट हला कि, पिलांगर किछ अफेक्टेड हला कि, बुझि पड़छ तो. हैव यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन PSC एंड एस्टिमेट्स कमिटी? Our last la committee on public sector undertakings. So periodically they will take up a public sector undertaking. Now we come to the tricky part of the question. Hey to pura tricky part of the question. How effective are these committees? Please note down, how effective are these in ensuring accountability? Now please note down, after the examination is over, we are supposed to give an action taken report. Please note down, ATN, action taken report, ATN, within a certain time. What action for recovery of loss, for fixing responsibility. So they will ask you, action taken report. Say jo prashna ta pachalo,
please note down, in countries like Germany and France, the committees have judicial powers to punish. So they can order punishment. Whereas India doesn't have that provision. In UK, they have judicial powers. Please note down that in their accounts, public accounts committee, there is always a judicial member. Please note down, always a judicial member. They always rope in a retired judge in their committees. So, culpability, accountability, true accountability and culpability is never ensured in the Indian system. But though there is a fear when you are appearing before a public accounts committee. There is tremendous fear. But by and large, action taken report, most of the time they don't submit in time. They will try to do window dressing. So you can always just write down that while there are elaborate mechanisms for review of audit irregularities, the follow-up action by the concerned departments to fix responsibility or to responsibility or to ensure institutional and structural reforms. Institutional and structural reforms are few and far between. I'll explain this. Besides, without punity powers, in countries like Germany and France, very often, willful defaulters also escape the hands of law. What did they suggest in that last para? प्रथम कथा ला गोटे ला action taken report रे कौन तमे action ला का संग्रह. But most important होची कौन तमे institutional and structural reforms कोच. यदि तमर गोटे सबु बेले गोटे धर किछ loss होची. Supposing there is a recurring loss. We found in respect of ordnance factories, there was a recurrent loss in a certain factory. सब बेले loss होची. So one of the suggestions which PSC had given je tame nuwa machine kino eta ko dispose of karo tame nuwa processes ana je tame seta nakala tale you again keep on encouraging those. See eoda hame koche institutional structural reforms. Is that clear to all of you? ठीक है answer ta. So we'll now go to one more and then is that okay with you? हाँ आ गोटे just गोटे छोटे 5 मिनट सार दिस आमे गोटे खाली देखिबा taxation of mines ए गोटे खाली देखिबा एटा टिके डिफिकल्ट केस ता से सो एटा होचे गोटा जजमेंट बुझलो त एटा सार पचार चंते गोटा जजमेंट पचार चंते हला को कहला आउथर करिया पर करिया ना कोन हां को ठीक अछि एटा टिके मन रखो सो काली करिबा ना बुधर दिन करिया Is that okay? So out of pilati besi ase ko hot को पेंड्राइव टा गला कोडे तो सो आज हमें दीटा माने सर गुटे कहि दे ठीक ठाक हला बोली कहि दे न सर कहबे सर कोन कोले कोन जानि पेलिन किछि हां
आमे काली जो जबे तुम कहियो मते so we will do 4 more interesting अच्छा आउ गोटे जिनिस तुम कहूँ तुम नोट कर रख कि तुम मैंने टिके 2024 और 2025 रो important Supreme Court judgments that you podcast. Now please remember there are about 12-13 important judgments. ठीक है देखि देखि आस्तिबो हैला 100% तो परीक्षा रे गोटे सेटा करि प्रा करि प्रिपेयर करछ ना कहू जो सर मु करिछि आपनकर माने मु जानि पारली मन कथाटा मु जानि पारली मन कथाटा मु जानि पारली मु कहली एटा सर कर मन थाई पारे काळे तेरो मु कर दिछि मु एग्जैक्टली से कथा करिछि से केस उडा तमे धर दबो ना आ तमरो किछि सेटे आराम रे तन जीवो एग्जांपल दापे जेमते कोचन दिवाली रे बाण फुटेवाटा कॉन्स्टिट्यूशनली टेनेबल कि नो बोला तमे खाइलो तमे मार खाइलो कोन से माने ऑन द फेस ऑफ इट एटा सच सिंपल आंसर नाही भलो कथा नो सर somebody will say नाही सर मोर धर्म को आपण आघात कले तणे कहबो जे सर मोर आपण राइट टू लाइवलीहुड ता नै गले मु करतली बाण फटोतली तो राइट टू लाइवलीहुड मोर नै गले आपण सर आपण 191 जी रे मोर सर राइट टू लाइवलीहुड थिला मोर राइट टू लाइफ नै गले सर मु बाण प्रोड्यूस करतली मु कोन बुझतो कथा तमे कहबो सर मोर लाइट टू लाइफ नै गले मो कानो एम तो गुदगुद होतला मो बॉयफ्रेंड से गपसो कर पालिनी सर मने केते राइट टू प्राइवेसी मोर खराब करतली के कहबो सर राइट टू प्राइवेसी के कहबो 191 जी बुझतो तो कथा के 21 रे अछि के 191 जी रे अछि के कहूची सर मु 25 रे अछि मु रिलीजियस माइनॉरिटी मु सला मुसलमान मो नेट काई बाण फुटुचो मजार ते भाबनी प्लीज रिमेंबर मु जोडा तुम कहूची देयर आर मेनी गोटे जे सर बिफोर एंड तो मन रखो देयर आर मेनी फंडामेंटल राइट्स which are at cross purpose with each other. The question is, can one fundamental right supersede the other? Eight hours issue. बुझी पड़छ कथा माने your right to privacy is taking away his right to make fataka. Your right to private life is taking out his right to livelihood. कोटा प्राइमरी हो जजमेंट रे देखिया पड़े आमे देखिवा से जजमेंट सर कोन ज्ञान देले आमे देखिवा को ज्ञान देले चंद्रचूड़ सर कोन सर वॉइस आसुन सर वॉइस आसुनी नहीं सर कहले नेक्स्ट क्लास जो हबो तो नेक्स्ट क्लास ता नो माने एवरीवन शुड प्रेजेंट कारण एटा तमरो प्रीलिम पाई नहीं पूरा मेन पाई वेरी वेरी इंपोर्टेंट नहीं नहीं आउ माने जो धर हमें कहले डायरेक्ट परीक्षा रे पड़ी दउची धर आईआर के लोक केस हला कि श्रेया सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र तो जेमति कि लास्ट ईयर रे कोन कोन केस स्टडीज हेची आ ता ऊपर ओटे डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ी पारे किबा हमें सब गुडा को माने जोठी फंडामेंटल लाइट हला कि को इशू आसिला गवर्नेंस इशू आसिला सेई गुडा का हमें केस स्टडीज रे देई परिबा एग्जांपल देई परिबा जेतला हमें कहू छी गोटे स्टेटमेंट देखु ताको वेरीफाइड करिया पई गोटे केस स्टडीज और गोटे डाटा दोचे तो सेई गुडा को निहाते दरकार सो नेक्स्ट क्लास रे जो सर जो कहिले कि हमर केस स्टडीज ऊपर हमें जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट तो मु समस्त को रिक्वेस्ट करबी केस करिछ 12 केसेस करिछ जोडा जोडा मोस्ट इंपोर्टेंट हम ये दरकार भी से गुडा को सो
बुधवार दिन करबा हमें structure को कहना आउट है डेप्थ है आउट है कमर इनसाइड सब को भलो भलो पिला मत आई हैव सीन वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स कंटेंट आसु किंतु तांकर फाइनली इट इज द ओके नो दी फॉर बुक अल्टीमेटली वी विल सर्टेन सक्सेस तारीख टेल यू super safety so कमर कौन इनसाइड अछि based on what तो ये तो खाना बहुत ज्यादा लो या मुझे किसी भी करती ओके सो नेक्स्ट क्लास टा के मिस करियोनी आ मु रिक्वेस्ट करबी जो माने ऑनलाइन जो प्रीलिम पिला से माने एटलीस्ट प्रेजेंट रो फिजिकल क्लास रे फिजिकल नहल त हमको तो इजी त ऑनलाइन पढ़िया पे सर आछंती पूरा भाव ननन कानन माने कि माने समस्त रहिले प्रेजेंट रहिले आ व्यस्त होती तार बॉयफ्रेंड सलमान बनाउची से गाड़ी करनी कोन अच्छा क्लास होते जेरे की लॉ स्कूल रे गोटे क्लास होते से कोन से नेट पढ़ी रे तार बार मैसेज आसी तार वाइफ में जो गर्लफ्रेंड रो से बहुत टेंशन होसी से जो ऊपर कोन कर अछि तो लाइसेंस दो पासे मैंने से ऊपर क्लासरूम को से फोन करके आसुची तको बेइज्जत करके पूरा एकदम डोर पकड़ अछि मुझसे खाता खोल के लिख तू कौन क्या 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 हो गया नहीं सर सॉरी सर कैसे तुम तोड़ी पड़ा सर आजकल वीडियो में तो को उठे देवे फोन तो ना तो उठे देवे ओके सो ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे हमें इंपोर्टेंट केस स्टडीज गुडा को करबा ओके सर कौन वेबसाइट रे सर पाइबा सर कोडा कोडा सर जो केस पड़ा कौन वेबसाइट रे पाइबा पीआरएस रे पाइबा केस स्टडीज गुडा को तमे ଟିକେ सर्च करके देखिबो माने गूगल ले सर मिल जिवो सर अलग अलग इंपोर्टेंट जजमेंट्स बाय द सुप्रीम कोर्ट हला पर 50 टा खंड अछि सेटा होछि ओवरऑल किंतु आई एम टॉकिंग ऑफ द रिसेंट वंस 2024 20